Unacademy. Let's crack it. सो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आपने अपना एलएलबी कंप्लीट किया है? यस सर। जोधपुर से? यस सर। 5 एड का सेगमेंट रहा आपका? यस सर। कितने ट्राइमेस्टर थे आपके? So we had a bi-semester system, 2 semesters in 1 year. हाँ. Tri-semester system is Okay. in NLS Bangalore. So 5 years it's equal to 10 semesters. 10 semester. Yes sir. In your last semester, what are the main subjects? So pleadings, drafting of pleadings was one of the subjects. Constitutional remedies was one of the subjects. And in the last semester we have very few subjects because there is a seminar which we have to prepare, and that wasn't much possible because of the COVID. So last semester we didn't have much on the academic side. Okay. So you mentioned in your favorite subject that I have enjoyed reading. So every law while today. सारे सब्जेक्ट आपके फेवरेट है that you want to say? Sir, actually I have recently developed an appreciation for reading law. So there's Recently what you develop? An application? an appreciation Mobile for an appreciation Appreciation. for reading law. So I enjoy reading all the laws. I'm still in the learning phase, इसलिए I don't have a favorite subject now right now because I like reading CPC also. I like reading every subject. तो आपके इस लाइन का लिटिल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? I have enjoyed reading every law while today. Until today. अच्छा, until today. Yes, Okay. sir. ठीक है, until today. Until today होता है या till today होता है? Sir, I'm not sure या of. till now होता है? हाँ. Until now, I guess it's until now, but I'm not sure. चलिए, कोई बात नहीं. एनएलयू तो इंग्लिश मीडियम से हो ना आप तो? Yes, sir. पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी थी? Sir, NLS Bangalore. एनएलएस नाम है उसका? National School of Law, Bangalore. NLSIU, sorry, sir. NLSIU. ठीक है. और इनको रेगुलेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है? एनएलयूज को रेगुलेट करने के लिए ये एनएलयू में एडमिशन के रिगार्डिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई है ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी? So CLAT का कंसोर्टियम बनाया अभी एक recently. That body conducts the examination and proceeds with the counseling of the students and allots the college to the students. कहाँ पर है इसका मेन ऑफिस? Sir, I believe it is in Delhi, but I'm not sure, sir. आप लखनऊ से हैं बेसिकली? Yes, sir. यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट घूम लिए आप? So UP, I have not traveled much in UP. I have been to Kanpur, I have been to Lucknow, and I have. लखनऊ की कुछ बेसिक जानकारी है आपके पास? Yes, sir. कितने जिले अटैच होते हैं लखनऊ से? Sir, Sitapur,
कानपुर सर चलो। सॉरी ये जितने भी जिले हैं उनमें कईयों के नाम के पीछे पुर आता है, कानपुर, सीतापुर। इस पुर शब्द का अर्थ क्या होता है? सॉरी सर आई डोंट नो. जानकारी नहीं? No sir, I'll read into it. लखनऊ, कुछ अर्थ है इसका, कुछ लॉजिकल है इसका मीनिंग? Sir, initially we find the mention of this place in the holy text of Ramayana, where Lakshman ji was given this region and it was named Lakshmanpur. After that, after the annexation of the Mughal Empire, this place was named as Lucknow, as far as I know. So, नवाबों की नगरी कहते हैं क्या इसको? Nawabon ki nagri. कैसे नवाब? So because they after British annexation in India, Lucknow was the last state which was under Mughal Empire, and it has been Last state, last last city, last region. last region, या लास्ट पेंसिलरी स्टेट्स? स्टेट नॉट श्योर। Not sure. क्या होगा? स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रिंसली स्टेट है, क्या है? आपका बॉर्न एंड बॉटम लखनऊ का है? Yes sir. कब का बर्थ है आपका? So 15 December 97. 97 का? 97 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, क्या नाम था उसका? 97 में लैंडमार्क जजमेंट आया. जिसके अकॉर्डिंग फिर एक कानून भी बना उसी आधार पर, वर्क प्लेस से संबंधित है वो। I'm sorry sir. नहीं जानकारी में? No sir. I'm sorry. चलिए, सेक्शन 354 आईपीसी पता है? Yes sir. 509 पता है? Yes, I'm sorry, sir. Maybe it was the Vishakha case which initiated at that point of time. विशाखा केस में विशाखा कौन थी? So she was a social service worker who was working for the prevention of child marriages. उसका नाम विशाखा था या भवरी देवी था? That, sir, I'm not sure. Sorry, sir. नॉट श्योर। Not sure. 354 पढ़ा है ना आईपीसी का आपने? Yes, sir. 509 भी पढ़ा है। Yes, sir. डिफरेंस बताओ। So section 354 requires only an assault of any kind. It need not have any physical contact, and only some gestures or can make 354 में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ असॉल्ट आएगा, क्रिमिनल फोर्स नहीं आता है। Sir, I haven't revised, sir. I'm very rusty on it. I'm very sorry, sir. अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। कंपाउंडिंग सुना आपने 320 का अपराध? Yes, sir. अगर किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ है, Yes, sir. तो क्या उस अपराध को महिला की कंसेंट से कंपाउंड किया जा सकता है? No, sir. Sir, it is not mentioned under section 320, either in clause 1 or clause 2. दोनों में कहीं मेंशन नहीं कर रखा है? Not that I know of, sir. No, sir. चलिए, आपके घर पर एक काम करने के लिए एक महिला आती है, मेड आती है, Yes, sir. ठीक है? वो प्रेग्नेंट है, Yes, sir. ठीक? उसका प्रेगनेंसी का हाई लेवल चल रहा है, 7th मंथ की प्रेगनेंसी है उसकी, Yes, sir. ठीक है? आप हैं, आपके माता जी वगैरह सब उस परिवार में ही रहते हैं। तो 4 दिनों तक वो महिला आती नहीं है। 5वें दिन जो महिला आती है तो पता चलता है कि उसने मिस कैरेज करवा दिया, ठीक है? उससे Okay, पूछा sir. कि भाई क्यों कराया, तो उसने कहा उसके पति ने कहा तो उसने करवा दिया, ठीक है? महिला की कंसेंट शामिल है, तो आपकी उस महिला मेड के खिलाफ में आप शिकायत कर सकते हो क्या? पहले तो ये बताओ, ये ऑफेंस था कि नहीं था? Yes, sir. It was an offense. ऑफेंस था ये? So, because even though the consent of the parents are required, the medical board has to also write down the reasons that why the medical pregnancy is should be terminated. If any physical or mental agony is supposed to be caused to the woman in the future, or any other medical reason, the medical board should also consent to it, and not just the consent of the parents would. चलो ठीक है,
अपराध हुआ है, कुल Yes, मिला के sir. अपराध है, नहीं है? Yes, आप sir. शिकायत कर सकते हो क्या? आपका सिर्फ इतना संबंध है कि वो आपकी नौकरानी है और कोई दूसरा ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई दूसरा रिलेशन नहीं है. Yes, sir, because knowing for a commission of an offence and not uh, sharing the information with the appropriate authorities is should also be uh, something which a reasonable man should और do. उसके लिए तो सेक्शन 39 सीआरपी से आना चाहिए ना. 39 की सीआरपी से ऑफेंस होगा तब आपका ड्यूटी बनेगा ना. Yes, sir. 39 में तो आता नहीं हो. Yes, sir. 312 तो Yes, sir. So it may be a case of domestic violence act, and in a case of domestic violence or cruelty by the husband. सर प्लीज. आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया किस पर आपका Yes, sir. इंटरेस्ट है? Yes, sir, because I haven't learned that much on any subject, so to know that I am confident about that subject, but I am still in a learning phase, and I enjoy reading all the subjects until. लखनऊ प्रसिद्ध है किसी मामले में? Sir, काफी. लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ रह रहे हैं, बाई बर्थ भी लखनऊ आप हैं. Yes, sir. क्यों फेमस है, क्यों कहा जाता है? So first thing that comes to my mind is the art and architecture that we have since the Mughal Empire, the tehzeeb जिसे कहते हैं, the hostility we have, and the delicious street food, of course, that we have, various monuments and चिकन के मामले में फेमस? chicken also. Yes, sir. Chicken karigari is also very famous from Lucknow. It has roots over here. कैपिटल रीजन क्या है? कैपिटल रीजन कहा जाता है, लखनऊ में कैपिटल रीजन बना दिया गया है. Yes, क्या sir. आपको जानकारी कैपिटल रीजन क्या है? Say there is a plan which is being implemented for the state capital region, which would include 7 districts, Lucknow and around Lucknow, including Hardoi, Kanpur, and Sitapur, etc. And it would constitute of a state capital region, just like a national capital region in and around Delhi. And that has to be implemented. The first draft would be implemented until the year 2030, and it would go on as has been planned. लखनऊ की बाउंड्री बता पाएंगे क्या, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़ते हैं? Sir, I'm not very sure, but Barabanki we share a border, Kanpur we share a border, Sitapur we share a border with, and that's all, sir. कानपुर is not. Sir, Oh, Kanpur is not adjoining district. Raebareli we have. Unnao is there. Unnao is there. Unnao Adjoining Junction is district. there. Kanpur is not adjoining district. Okay, I'm sorry about that, sir. हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? कुछ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हमारे पास है. Yes, sir. एक हिंदू है, Yes, sir. हिंदुस्तान में पहले रहता है, बीटेक वगैरह कर लेते हैं, कंप्लीट करके एनआरआई हो जाता है. यहाँ उसकी शादी घर वालों ने कर दी है. पहले उसकी शादी एक हिंदू लड़की के साथ उसकी कर दी है, और एनआरआई हो उसके बाद वो फॉरेन चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है. अमेरिका में वो एनआरआई होने के नाते वहाँ के कहते हैं फॉरेन कंट्री किसी लड़की से शादी कर लेता है. वेदर ही इज लायबल फॉर बाइगमी और नॉट? So he shall be liable for bigamy even though the second wife is not Hindu, because the husband is Hindu and he solemnized the second marriage while his first wife was alive, and this constitutes an offense of bigamy. He was living in America. Sir, I don't think that would be a consideration here, because his first spouse was living, whether or not in the same country as he is, but he solemnized the other marriage and it was a valid marriage, and the second marriage shall be void. In America कहते हैं हिंदू लॉ कैन बी प्रिवेल. No, sir, but Hindu law would apply on that person. How he can कहते हैं मैरिज सेकंड मैरिज? So because Hindu law would apply on that person, he is under the foundation of the Hindu law. Wide and voidable marriage?
So because bigamy is as per section 5, bigamy, if you do a bigamy, the marriage would be void and not voidable. It constitutes under essentials of marriage under section 5 clause 1, and thus it would be a void marriage. वाइड एंड वाइडेबल सेक्शन कौन है? वाइड मैरिज एंड वाइडेबल मैरिज किस सेक्शन से डील होता है? किस सेक्शन बताया गया? Sir, I believe section 11 and section 12. 11 and 12. 12. को पार्टनर आप समझते हैं? को पार्टनर Co-partner. सहदायकी जिसको कहते हैं. Yes, sir. सहदायकी का प्रयोग कहाँ किया गया है? Sir, in a joint Hindu family. ज्वाइंट Yes. है क्या को पार्टनर? So co-partner is a right which is acquired by the status of birth, and a co-partner has the right to ask for the partition of the property, and he has the right to be maintained by the proceeds of the property, and he is a member of joint Hindu family. Since 2005, daughters are also made co-partners by the judgment of the Honorable Supreme Court. Who are co-partner? Sir, so 4 generations from the male head, one male head till down the 4 generations of his ancestors are descendants are co-partners. नेचुरल गार्जियन हिंदू लॉ में कौन कौन होते हैं? So natural guardian firstly would be the biological parents, father, and secondly the mother. In a case, it was decided by the Honorable Supreme Court that even though if the father is present, the mother could be a natural guardian if the father is not physically present or even mentally present for the care of the child, and in that situations mother could be the natural guardian of the father in spite the father is alive until then. क्या किसी ऐसी परिस्थिति में मदर की अनुपस्थिति में भी फादर को नेचुरल गार्डियन बनाया जा सकता है? कोई ऐसी स्थितियां हैं? कोई? Yes, so when the mother is the natural guardian only for the starting of the child developing ages, as far as I believe. मैं पूछ रहा हूँ कि जब माँ की उपस्थिति में फादर को गार्डियन कब बनाया जाएगा? So when उपस्थित है, मैं नहीं कह रही माँ नहीं है, माँ तो है ही है, लेकिन कभी कभी फादर को भी गार्डियन बनाया जाता है जिन परिस्थितियों में, भी तो कुछ ऐसी कंडीशंस होगी ना? Yes, sir. Sir, I'm not able to recall, but as far as I know, if the mother is not of sound mind or is unable or is incapable of taking care of the child, as a natural guardian should. मुस्लिम लॉ में Yes, sir. मैरिज को क्या कहा गया? Sir, according to Hidayah and Mullah, Muslim law is a legal contract. It even though has a sacrament of a religious angle, but it is said to be a binding legal contract, since many of the essentials are similar. For example, ijab and kabul offer an acceptance in a same sitting, and dower as meher, which would be given on the dissolution of marriage. And in Quran also it has been given a status of a legal contract, but also in Quran it is also said that the people who solemnizes marriage are the people who would go to heaven, and it is a sin to not marry. What are the main essentials of Muslim law? Main Muslim essential, marriage law. sir, ijab, which is offer, kubul, which is acceptance. It shall be in the same sitting, not necessarily physically present, but in the same transaction. There shall be 2 witnesses, 2 male witnesses. If not 2 male witnesses, there can be 1 male witness and 2 female witnesses. And there shall be a dower, which even though not decided, but there shall be a provision of dower. What is the main difference between Hindu law and Mohammedan law? In terms of marriage, In terms of marriage. Sir, Hindu law treats marriage as a sacrament, and it always, as per the provisions also, we can see that it is
it makes the dissolution of marriage very tough, and it requires the marriage to be made undissoluble and maintained as long as possible. However, under Muslim law, the dissolution of marriage is not that cumbersome of a process. मोहम्मदन लॉ में मेहर का प्रावधान है, हाँ जी सर. हिंदू लॉ में स्त्री धन का प्रावधान है। दोनों में कोई इक्वलिटी है या दोनों अलग अलग है? Sir, meher is something which is given to a woman after dissolution of marriage, for her maintenance after the divorce, for the starting period. And stridhan, I'm not sure of that. How is it different, sir? I'm not sure. स्त्री धन भी तो जो उसको घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से जो मिलता है वही स्त्री धन होता है उसका। Yes, sir. जो मैरिज हो करके जो लड़की आई है, Yes, उसको sir. जो भी मिलता है वो स्त्री धन होता है। Yes, sir. तो स्त्री धन परिभाषा बदल गई, स्त्री धन यही है। Yes, sir. और हिंदू मोहम्मदन लॉ में जो उसको डावर प्रोवाइड किया जाता है, हाँ इतना आपको दिया, मेहर आपको इतना दिया जाएगा, शादी हुई तो इतना मेहर, जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी तो आपको इतना मेहर देना पड़ेगा। Yes, sir. तो हमारे पूछने का मतलब क्या दोनों इक्वल फुटिंग पर हैं या अलग अलग हैं? Sir, I'm not sure, but Stridhan is a mark of respect for the woman, and it is given with regards to the love and respect for the woman. यही मैं जानना चाहता था। Yes, sir. And meher is basically an essential for the marriage, which has to be given. Yes, yes. Who is मुतवल्ली? मुतवल्ली कौन है? So, Mutwali, sir, I'm not very exactly sure, but it is a person who takes care of the waqf, the private waqf or the public waqf, whenever it is created by a person, and that is all I know about him, sir. Thank you very much, sir. क्या है शुभ नाम आपका? Sir, Sankalp Pandey. संकल्प जी, ये बताइएगा, क्या कोई अपराधी Yes, sir. अपने मामले में गवाह हो सकता है? Yes, sir. किस बारे में? So he can become a defense witness under section 311, I believe, but I'm not sure. Under section 315, sir. Under section 315, the Code of Criminal Procedure allows him to be a defense witness in his own case. जितने अपराध होते हैं, Sorry, sir. अपराध होते हैं, Yes, sir. क्या ऐसा है कि कोई एक्यूज अपराध को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सके? अपराध को as a matter of right claim कर बेल, सकते bail को? Yes, sir. The bailable offences, the offences which come under the bailable offences as per the first schedule, there the bail can be claimed as a matter of right. And secondly, in cases of non-bailable offences, if there is a provision of default law under section 167 clause 2 का proviso, it states that if the investigation has not been completed within 90 or 60 days as per the offences it has been prescribed, there is a provision of default bail, and in that it becomes a right of the accused to get bail, and in that case also bail can be claimed as a matter of right. अभी आप पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? So last few days I am not in touch with the newspaper, but टीवी देखते हैं, कभी समाचार वगैरह सुनते हैं? Sir, very recently I have started to develop this habit. I am not very attached to the current affairs. पेपर नहीं पढ़ते हैं तो कैसे आप जनरल अवेयरनेस के बारे में आप बता पाएं? Sir, I realize the importance of it, and I am trying to bring it to my daily lifestyle. आज से करीब 1 या 2 महीना पहले Yes, sir. मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी। Yes, sir. वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब की थी। क्या ये कोई अपराध है? Sir, it's for sure battery under IPC, and it may also come under the Oppression of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act, and
Other than that, sir, I am not sure. टाट पढ़ा कभी? Sorry, sir. टाट पढ़ा कभी? Sorry, sir. टार्ट. Taught, sir, taught. Taught maybe, sir, battery. It would be battery. अच्छा ये बताइएगा Yes, sir. कि रेलैंड एंड फ्लेचर Yes, sir. इसमें क्या लॉ लेट डाउन हुआ था? Sir, it laid down the law of strict liability, where even if the plaintiff is not at fault, even if the defendant is not at fault, but he would be liable. There was the facts of the cases were such that there was a land under the control of the defendant, and he had made a water well, some kind of water well. The water escaped from the occupation and control of the defendant and went to the plaintiff's ground and caused damage to the plaintiff's property. In that, even though the defendant was not at fault, but the defendant was made liable because of the strict liability which was laid down under this case. This strict liability has been modified in the case of MC Mehta versus Union of India, where the Honorable Supreme Court laid down that now it is not only the strict liability, but it has been converted to absolute liability, where we are in a stage of economic and social development of the country, where many industries and infrastructure are such that it may cause much harm to the public, even without any of the fault of the industries, but the people would face losses. And thus, on those industries like the Bhopal Gate strategy, on those institutions, Supreme Court fined compensation to give to the plaintiffs, even though they were not at fault in any matter how. That was the phenomenon of absolute liability, concept of absolute liability. इंजेक्शन जानते हैं आप? Yes, sir. टेम्पररी इंजेक्शन क्या होता है? So temporary injunction is a order of a court, either directing a person to do something or directing or prohibiting him to not do something. It is given while the case is being heard and before the case has been decided. It is given just so that no damage has been caused while the case is being heard, and in that cases temporary injunctions are given. For example, the plaintiff might be going to be dispossessed from the property, or some property might be transferred to any other person. To stop that, injunctions may be granted. एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे. Yes, sir. Why do you think that you should be a competent judge? मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है आपको एक जज बनना चाहिए? Sir, I believe bar and bench both play a complementary and equal role in delivering justice. Both have the same object to do that, with certain capabilities that I possess, which would be, of course, trained upon during my training and under the guidance of my learned seniors. I believe that I would be more suited to become an asset to judiciary as I would be to the bench, or to the bar, sorry. For example, I'm a very good listener. I like to listen. I am a very patient listener. I try to take out the issues and work upon it. I'm a problem solver is what I believe, and I would like to improve on that. इंस्टेंस बताओ कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की आपने? Sir, पर्सन की एनी प्रॉब्लम? So not any specific problem that comes to my mind, but I enjoy doing this. I believe that is where my energy is not spent. I can do it anytime, and it doesn't require any extra energy from my part, and I do that very interestingly. चलिए, हिंदी की एक लाइन है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान. क्या अर्थ होता है इसका? I'm sorry, sir. Can I please hear it again? करत अभ्यास के जड़ मती हो तो सुजान. क्या अर्थ होता है इसका? जड़मती हो सुजान.
So maybe along the lines of keep trying harder and harder until you achieve. I'm not sure. Okay. So, संकल्प पांडे जी. सबसे पहले मुझे आपका ये एटीट्यूड पसंद आया कि आपने किसी भी तरीके से है ना सिंपैथी की कोई अपेक्षा नहीं रखी और होनी भी नहीं चाहिए. Yes, sir. है ना, आप टैलेंट के दम पर चलने वाले इंसान है, ऐसा मेरा मानना है और वास्तविकता में है भी. Yes, sir. और कहीं कहीं यही चीज़ जो है आपको आगे भी लेके जाएगी. करेक्ट. बट थोड़ा बहुत जहाँ पे अपन को कुछ हेल्प इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करना है वहाँ पर हमें थोड़ा सा करना चाहिए. Yes, sir. जैसे मैं पहले पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, मुझे जो आप में चीज़ें अच्छी लगी. Yes, sir. बहुत ही हम्बल वॉइस है आपका, जेंडर एटीट्यूड है, कहीं पर भी एग्रेवेटेड नहीं है, एग्रेशन नहीं है ना. और जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके अंदर जस्टिफिकेबल मेंशन हो रही है. लखनऊ की कुछ हिस्ट्री के बारे में जो आपने लक्ष्मण जी का वृत्तांत बताया या फिर जो हिंदू मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करवाया, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, स्त्री दंड, डॉवर वगैरह, वो कॉन्सेप्ट ठीक था, है ना. हालांकि थोड़ा सा पहुंचने में देरी हुई, जैसे स्त्री दंड डॉवर के सवाल को समझने में, एंड तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा दिक्कत है, बट फाइनली आप पहुंच गए. एक पॉइंट और भी ऐड हो सकता है, डॉवर कौन देता है? डॉवर देते हैं वर पक्ष वाले, स्त्री धन देते हैं वधु पक्ष वाले. पे के पर्सपेक्टिव से भी आप यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते थे. क्या बाकी टेम्परेरी इंजेक्शन का ऑर्डर वगैरह जो से मेंशन करवाया, कुछ चीज़ें थोड़ा सा लेट रिकॉल होती है, जैसे विशाखा वाली बात आपको थोड़ा लेट रिकॉल है. ऐसे समय में बोर्ड से थोड़ा टाइम ले लिया करो. 2 सेकंड 4 सेकंड लोगे ना, क्योंकि दिमाग में आया तो आपके ही था, हमने तो कोई इशारा दिया नहीं. फिर आपने ही बताया विशाखा वाला मामला. विशाखा, वहाँ पे ये विशाखा तो NGO था. जिस महिला ने, जिसकी बात आप कर रहे हो ना, उसका नाम तो भवरी देवी था, जिसका गैंगरेप हुआ था इस तरीके से, उसका नाम भवरी देवी था. और विशाखा NGO ने इसकी आवाज़ उठाई थी, इसलिए इस केस को हम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं. ठीक है. और बाद में फिर 2013 का प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस कानून जो है वो बना था. राइट. तो इम्पोर्टेंट मामला था वहाँ पे. एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपसे जो फीमेल सर्वेंट के बारे में पूछा मैंने. Yes, sir. तो देखो उसमें क्या है कि 312 का मैटर आता है और अपने 320 के साथ ही कनेक्ट करना था उसको. Okay, 312 है ना, याद है मिसकैरेज वाला पॉइंट वहाँ पर आता है. आप थोड़ा क्या है कि अलग अलग जगहों पे चले गए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वगैरह, क्योंकि उस कानून में तो आपका कोई रोल नहीं है ना. आपका रोल तो IPC में हो सकता है, एनीवन कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. सुना है कॉन्सेप्ट है ये, एनीवन कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. तो आपके उस सवाल के जवाब में मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा था कि आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताएं. एक बेसिक सी बात थी वो. ठीक है. तो डेफिनेटली आप कर सकते थे कंप्लेन वहाँ पर, क्योंकि वो आपका मामला कोई 195 से 199 के स्पेशल केस में तो कहीं पर आता है नहीं. ठीक है. वो चीज़ कर सकते हैं. और कंपाउंडिंग सेक्शन 320 के सबसेक्शन 2 में आता है. 312 और 509 सिर्फ ये 2 ही ऐसे अपराध है जो महिलाओं के विरुद्ध हैं और कंपाउंडेबल हो सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. CVC बोलता है, कंपाउंडेड बाय विक्टिम विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. 320 सबसेक्शन 2 का मामला ही बनता है. तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, क्योंकि ओनली 2 ऑफेंस आर कंपाउंडेबल. दैट्स व्हाई. ठीक है. बाकी शेड्यूल 1 में ये नहीं लिखा हुआ है कि बेल कैन बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट. वहाँ तो सिर्फ क्लासिफिकेशन है. आपका इंटरव्यू जैसे ही आप गेट को ओपन करेंगे, डोर को ओपन करेंगे, वहीं से शुरू हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. आपका ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप कैसे चल रहे हैं, क्या आपका पोस्चर है, Yes, sir. क्या आपने पहन रखा है. Yes, sir. वहीं से सब ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा. वहीं से आप तो इस तरह से जाइएगा कि आपको अच्छे ढंग से Yes, sir. देखा जाए. तो एग्रीमेंट जस्ट फॉर अपीयरेंस. और मेरे लहजे में इसका आंसर ये है कि भैया जस्टिस not only to be done, it must be seen to It be must done. be seen to So be sincerity must not only within you, it must be seen to be there within you. Yes, sir. But आजकल तो से थोड़ा सबसे फ्रेंच पहले आपको एक ही आजकल लेसन पढ़ाया जाएगा कि पहले आप सेविंग करिए, सुबह उठिए, Yes, sir. निवृत्त होने के बाद सेविंग करिए, इसके बाद आप बाहर निकलेंगे. दूसरा ये कि सोबर Yes, sir. ड्रेस आपकी होनी चाहिए. Yes, sir. Sir, I'll do it. live like saint and work as hermit. It frees to love. Yes. Yes, sir. हाँ, तो अब आप उसी से कंपेरिजन कर लीजिए, कैसा आपको जाना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे आप वहाँ जाएंगे. I understand.